गुडविल का अमाउंट मिला, ओके। नाउ अभी एक्सपायर कौन हो गया है पार्टनर अपना, हु हैज एक्सपायर्ड, ए एक्सपायर्ड, देयरफॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल कितना रहेगा, इज इक्वल टू 6480 और उनका रेशियो था 2:1:1, so into 2/4, so 3240 is share of goodwill 3240। तो ये जो है गुडविल हम एडजस्ट करेंगे इन द गेन रेशियो, इन द गेन रेशियो। यहाँ पे हमको वर्किंग नोट नंबर 2 रेशियो A:B:C is equal to 2:1:1, राइट, यही रेशियो है 2:1:1। A died, therefore new ratio B:C। कहीं पे दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया, तो इट इज इक्वल टू 1:1। Gain ratio is equal to new ratio minus old ratio. Therefore, A's gain ratio is equal to 1/2 minus 1/4, equal to 4 minus 2/4 equal to 2/4. Same is with B. B का भी सेम ही है, therefore gain ratio is equal to 1:1। तो अभी इसका हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, डू यू नो व्हाट इज द एंट्री वी पास, याद है कुछ, B's capital account debited, C's capital account debited to A's capital account। अभी इसका 3240 है, इसका 3240 है, तो ये इक्वल अमाउंट 3240 डिवाइडेड बाय 2 1620। तो इसका जर्नल एंट्री कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 इज कैपिटल अकाउंट, ए में 0, बी में 1620, सी में 1620
और दूसरा इफेक्ट कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय दिस कैपिटल अकाउंट बाय दिस कैपिटल अकाउंट। ए के कॉलम में 1620 1620। Is that okay with all of you? फिर आगे बोला है an insurance policy of 10,000 each to be taken in individual name. The premium is to be charged against the profit of the firm. तभी इंडिविजुअल पॉलिसी निकाला है। इंडिविजुअल पॉलिसी तो अभी उसका 2 एंट्री आता है, याद है आपको कुछ? पहले तो हम लोग एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इज सेपरेट लाइफ पॉलिसी। बैंक में अपने पास कितना पैसा आया, ए एक्सपायर हो गया तो ए का पॉलिसी पूरा 10,000 था ना, इंडिविजुअल पॉलिसी ऑफ 10,000, तो ए का पूरा पैसा आएगा। $10,000। ओके, अभी इज सेपरेट लाइफ पॉलिसी डेबिटेड बीज separate life policy debited C's separate life policy debited to is capital to B's capital to C's capital। अभी देखो, A separate life policy debited 10,000, B debited 2,000, C debited 2,000। समझ रहा है कैसे? A एंड B, A का तो पूरा मिला, B एंड C का सरेंडर वैल्यू उन्होंने बताया है ना। The surrender value of the policy is 20% of, कहीं पे बताया था, मैंने पढ़ा हुआ है। इधर किया assuming that surrender value of policy is to be 20%, तो बी और पी का सी का पॉलिसी सरेंडर हो गया, तभी ये 14,000 टोटल डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 2, तो ए का 7,000, बी का 3,500, सी का 3,500। ये वाला एडजस्टमेंट समझा आप सबको? ये एडजस्टमेंट समझा? हमने थोड़ी देर पहले इधर भी वही किया था, देखो वो इधर हमने पॉलिसी के अंदर किया है। कोई डाउट है आपको? तभी इसका हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, तो दूसरा इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सिंगल लाइफ पॉलिसी, या फिर यू कैन राइट
insurance policies account. A को 7,000, B को 3,500, C को 3,500. Is that okay? Upon the death of partner, he is to be credited his share of profit, interest on capital calculated upon 31st December. So, और एक working note, his share of profit. देखो हमने थोड़ी देर पहले ही नेट प्रॉफिट हमने 2016 का निकाला. 2016 का उन्होंने प्रॉफिट अपने को दिया है, कितना दिया है चेक करो. 2016 का प्रॉफिट दिया है 3670. कैसे बोला है? क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो हम उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है कुछ बोला नहीं है, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे जो है 16 के प्रॉफिट पे ही करेंगे. तो 3670 में से 2000 इंटरेस्ट का निकलेगा, इंटरेस्ट नहीं था, तो प्रॉफिट कितना है 1670. समझ रहे हैं? इज इक्वल टू 1670 multiplied by 2 upon 4 का 2/4 शेयर है 835. तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय P&L सस्पेंस अकाउंट. ए के अंदर 835, B 0, C 0. आगे बोला है what is said further, that the share of partnership policy and goodwill to be credited to deceased partner. वो हमने ऑलरेडी कर दिया goodwill calculation के वक्त में. A died on 30th September. The amount standing to credit to his current account was 450. तो इधर आ गया by करंट अकाउंट. वो उधर क्रेडिट में था तो इधर डेबिट में आएगा. करंट अकाउंट के क्रेडिट में था. हाँ, बाय बैलेंस टू बैलेंस. तो इधर आ जाएगा बाय करंट अकाउंट. ए का 450 था 00 और उसने ड्राइंग्स किया है तो 2 ड्राइंग्स 3000. Unrecorded liability 2000 was discovered and was recorded. तो अभी जब वो रिकॉर्ड करेंगे तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में 2 unrecorded liability 2000. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी.
सारे एडजस्टमेंट्स हमने कंसीडर कर दिए, तो अभी there is revaluation loss of 2000 by capital account A, B, C. 1500, 500. कैपिटल के डेबिट साइड में 2 revaluation 1500, 500. अभी एक्सपायरिंग पार्टनर का अकाउंट हम पहले क्लोज, सॉरी, एक्सपायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेंगे. एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट is equal to 22,525 minus 18,525 and 2 balance carried down $7,980 and 5,780. समझा सबको? यहाँ पे अगर आप देखो कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे सर बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाया? Why you have not prepared balance sheet? Can anybody of you help me for this? Not asked in the question. अच्छा चलो अभी मैं बोलता हूँ I want you to prepare the balance sheet. Prepare it and show. अभी मैं बोल रहा हूँ आप प्रिपेयर करो. चलो पूछा रहता तो बनाते क्या आप? ऐसा जरूरी नहीं है. इसके पहले प्रॉब्लम में इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखो उन्होंने बोला था प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म. देवाशीष यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज का डिटेल दिया ही नहीं है. ओल्ड बैलेंस शीट नहीं दिया है, तो वी डोंट नो व्हाट इज द एसेट एंड लायबिलिटी. बट फिर भी मैं आपको बोलता हूँ प्रिपेयर करो. बना सकोगे क्या? मैं बना के बताऊं? बना सकते हैं? ध्यान दो, फिर डाउट पूछना.
आ गया कुछ तो एरर आ गया। I'm getting difference of 2000. Six 420. Hold on, let me check it out.
Okay. See, I have prepared the balance sheet also. Although the information was incomplete, but we were able to prepare the balance sheet. अभी क्वेश्चन ये है कि मैंने जो कैश बैलेंस है वो लाया. अपने पास देखो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि उनका कैपिटल है 20,000, 10,000, 6,000, 4,000, 20,000 प्लस ए का करंट अकाउंट बैलेंस था 450. तो लायबिलिटी में अपने पास 20,450 था. ओपनिंग बैलेंस शीट में बना के बताऊं तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैसे था अपने पास कैपिटल अकाउंट ABC 1064, करंट अकाउंट ऑफ A 450, 20,450 और दूसरा कोई एसेट नहीं है ऐसा एज्यूम करेंगे तो कैश बैलेंस 20,450 है, वो ले लिया. ओके. अभी कैश अकाउंट में देखो हमारे पास पैसा आया 10,000 ए के पॉलिसी का एंड 2,000 बी एंड सी का पॉलिसी सरेंडर हुआ उसका ईच, तो 14,000 आया. आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 2,000 पे किया और ए ने ड्रॉइंग्स किया 3,000, तो कैश बैलेंस आ गया 29,450. तो कैश बैंक बैलेंस कैश बैलेंस 29,450. ये तो कैपिटल अकाउंट में से आया. बी का कैपिटल 7,980, सी का कैपिटल 5,780 एंड एज एग्जीक्यूटर 18,525. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के अंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट का 835 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2,000, 2835. सो ऐसे अपना कैपिट बैलेंस शीट टैली होता है 32,285 पे. Is that okay with all of you? In spite of this incomplete information, we were able to prepare the balance sheet with some assumptions. Illustration number 3 would be homework. You are going to try it as homework. तो आज अभी अपना दोनों पार्ट जो दोनों है ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिसी दोनों तरह से कंप्लीट हो गया है. जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी एंड सिंगल लाइफ पॉलिसी भी. Any doubt in both the policy treatments? The other part we are going to discuss later. Okay, so I'm concluding up my lecture for today. That's all for today.